बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि हमारे पास जो हैं इस सब डिविजनल इन्फोर्समेंट के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप सबकी रिवीजन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक बेटर प्रोविजन for the colonization and administration of government lands in the Punjab. Colonization of government lands Punjab Act 1912. Okay, next question is colonization of government lands Punjab Act 1912 was promulgated on, तो ये promulgate किया गया था 21 जून 1912। थोड़ी देर पहले आपको एक लेक्चर दिया है टेनेंसी एक्ट पे, उसकी डेट थी 23 सितंबर। ओके, और इसकी डेट है 21 जून 1912। सो वो थी 23 सितंबर 1887 1887, जी है 21 जून 1912। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर हाउ मैनी सेक्शंस, तो इसके बेसिकली जो सेक्शंस हैं वो 38 हैं और इसके जो शेड्यूल हैं वो 2 हैं और इसी तरह से इसके जो चैप्टर्स हैं वो 4 हैं। और वो कौन सा शेड्यूल है जो कि 1912 रेफ़र टू इन सेक्शन 4 में रेफ़र किया गया, तो शेड्यूल 1 है। ओके, विच शेड्यूल ऑफ द कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 रेफ़र टू इन सेक्शन 30, तो वो जो है सेक्शन शेड्यूल 2 है। वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है प्रीलिमिनरी को, चैप्टर 1 है जो डील करता है प्रीलिमिनरी को। और इसी तरह से ये चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं और ये क्योंकि आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे तो इसलिए ये जो सेक्शन और चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं मैं स्किप कर रही हूँ ताकि आपका भी टाइम जो है वो सेव रहे और मेरा टाइम भी सेव रहे। तो चलें यहाँ से डिस्कस करते हैं फर्दर। विच कंडीशन सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 49 है। विच कंडीशंस आर एप्लीकेबल टू ग्रांटीज हु एक्वायर प्रोप्राइटरी राइट, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि एप्लीकेबल हैं ग्रांटीज़ को जो कि एक्वायर करते हैं प्रोप्राइटरी राइट। तो ऑल ऑफ दीज हैं एक्सेप्शंस ऑफ चैनल्स, राइट्स टू मिनरल्स एक्सेट्रा, पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंट्री टू सर्च फॉर मिनरल्स एक्सेट्रा, कंपनसेशन फॉर डैमेज बाय एंट्री, demarcation of boundaries, arbitration, all of these. Next question is यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है the felling of trees planted by an owner or tenant or any village road or water course traversing his hold is not an offence under dash section, तो वो किस सेक्शन के तहत जो है ये एक ऑफेंस नहीं है, तो वो बेसिकली जो सेक्शन है वो सेक्शन 33 है। ओके, सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो सूट शेल लाई अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर एनीथिंग डन बाय हिम इन गुड फेथ अंडर, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि किसी का कोई नुकसान भी कर देता है या कुछ भी, लेकिन उसने किसी गुड फेथ के तहत किया था, तो उस पर कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है रेवेन्यू के किसी भी ऑफिसर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लोअर चनाब कॉलोनी द टेनेंसीज ऑफ tenants holding on the conditions applicable to camel owning tenants and camel owning chaudhries, village headman ordinary and village headman mule breeding, tree planting tenants and village minerals, all of these options are correct. Next question है, in the lower Jehlam colony the tenancies of tenants holding on the conditions applicable to, तो उसमें भी ये सारे ही मतलब एप्लीकेबल्स हैं। ऑल ऑफ दीज हॉर्स ब्रीडिंग टेनेंट्स एंड हॉर्स ब्रीडिंग नजराना पेइंग टेनेंट्स, विलेज हेडमैन एंड ट्री प्लांटिंग टेनेंट्स, विलेज मिनियल्स एंड ऑल ऑफ दीज। इन द लोअर सुहाग पारा कॉलोनी द टेनेंसीज ऑफ टेनेंट्स होल्डिंग ऑन द कंडीशंस एप्लीकेबल टू, तो इसमें भी ये सारे हैं हॉर्स ब्रीडिंग नजराना पेइंग टेनेंट्स, विलेज हेडमैन, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ any dispute arising between the provincial government and the grantee as to the property and rights hereby reserved to government, or as to any matter in any way relating thereto, or as to any of the conditions of the grant, or as to any of the conditions, any matter or thing, anyone connected therewith, the said dispute shall be referred for the opinion of the dash, whose opinion shall be final and conclusive between the provincial government and the grantee, तो बेसिकली क्या है वो कमिश्नर, किसका डिसीजन होगा, कमिश्नर का डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 विच एक्ट इज़ रिपील्ड, तो द गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 जो है वो रिपील्ड हो गया। ओके,
an area of which to which this act shall be applied by order of the provincial government, and unless the provincial government otherwise directs, any area to which the government tenants Punjab Act 1893 हैज़ अप्लाइड इन इज़ कॉल्ड, तो उसे कॉलोनी कहा जाता है. डैश मीन्स एनी पर्सन होल्डिंग लैंड इन ए कॉलोनी एज ए टेनेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स द प्रेडेसेसर्स एंड सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट ऑफ ए टेनेंट, दैट इज ए टेनेंट. टेनेंट का मतलब होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स any male to whom a tenancy is first allotted by the collector and includes the male transferee of such a tenant and any male nominated by the collector in accordance with the provisions of section 21 to succeed a female to whom a tenancy was first allotted, तो वो original tenant कहलाएगा. Which government may at any time by notification in the official gazette withdraw a colony or any part of a colony from the operation of all or any of the provisions of this act, वो provincial government है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सब्जेक्ट टू द जनरल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मे ग्रांट लैंड इन ए कॉलोनी टू एनी पर्सन ऑन सच कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. डैश मे इशू स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट्स ऑफ द कंडीशंस ऑन विच इट इज़ विलिंग टू ग्रांट लैंड इन ए कॉलोनी टू टेनेंट्स. प्रोविंशियल गवर्नमेंट. No person shall be deemed to be a tenant or to have any right or title in the land allotted to him until such a written order has been passed and he has taken possession of the land with the permission of the dash collector. The grant of any tenancy in accordance with any statements of conditions which have been or may hereafter be issued by the dash under the Government Tenants Punjab Act 1893 or under this act shall be deemed to be transfer of a land within the meaning of the Crown Grants Act 1895 and shall be governed by the provisions of the said act. Provincial government होगा. Okay, next question है any condition included in any statement of conditions which imposes an obligation of residence shall not be reason only of the temporary absence, shall not be deemed to have been infringed by reason only of the temporary absence of dash which has established a permanent residence in the estate in which his holding is situated. तो इसका आंसर भी टेनेंट ही है. Where in any statement of conditions issued before the commencement of this act reference is made to any register prescribed under the act of dash, then the record of rights or the annual record shall so far as may be deemed to be such a register. Government Tenants Punjab Act 1893. Next question is a purchaser from government of land who has been placed in possession of the land by order of the dash shall be deemed to be a tenant of such land until the full pay amount of the purchase money with any interest due thereon has been paid and the other conditions set forth in the statement of the conditions of sale issued by the collector have been fulfilled. Collector. Next question is if any person who after the commencement of this act has been put in possession of land in a colony as a tenant shall have given false information intending or having reason to believe that any servant of the state may be thereby deceived regarding his qualifications to become a tenant, he shall be deemed to have committed a breach of the conditions of his tenancy. When after the coming into force of the colonization of government lands Punjab Amendment Act 1951, any Muslim tenant dies, succession to the tenancy shall devolve on his heirs in accordance with the Muslim personal law Shariat, and nothing contained in sections dash of this act shall be applicable to his case. 22-23. The last question is if any person without permission of a revenue officer of a grade to be specified by the Board of Revenue, he shall on complaint made by order of or under authority from the collector be punished on conviction by any magistrate with a fine not exceeding 200,000 rupees or with rigorous imprisonment not exceeding 6 months or with both. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.